Hello, good morning, student. Today we are discussing on the topic of supply. Supply refer to the quantity of a commodity offered for sale, considering at different possible price at a given point of time. It means when price rise, supply also rise. All producers or the sellers are ready more and more goods to sell. This shows in the table and the diagram. We are showing in the diagram when price 10, 20, 30, 40, 50, quantity also rise in the same proportions 20, 40, 60, 80 and 100. It is also shows in the diagram. We are taking price on OY axis and quantity on OX axis. SS is supply curve and QQ quantity. When price rise, quantity also for sale is also rise. So next one, there is a difference between stock and supply. Stock, what is stock? In economics, in ordinary, stock and supply are same, but in economics term, supply and stocks are different. In the ordinary language, the term stock and supply are used in the same sense. In economics, both terms have different meaning. Stock refer to the total quantity of that commodity which at any given time is available in the market with seller. It means stock is measured on a point of time, whereas supply refer to that part of the stock that the seller is ready to sell at a given price at a given time period. Means supply is measured in a फ्लो टाइम्स मीन्स एक टाइम ड्यूरेशंस है जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स अपनी वस्तु को बेचने के लिए तैयार होता है. नेक्स्ट वन, we are discussing on the individual supply and the market supply. Individual supply refer to the supply of the commodity by an individual firm in the market. Means एक फर्म दी हुई कीमत पर या विभिन्न कीमतों पर कितनी वस्तु की मात्रा बेचने के लिए तैयार होते हैं. Market supply refer to the supply of a commodity by all the firms in the market selling that particular commodities. Means कि बाजार के अंदर जितनी भी उस वस्तु को उत्पादन करने वाली या बेचने वाली फर्में हैं वो भिन्न भिन्न संभव कीमतों पर कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होती हैं. अब हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स और इंडिविजुअल्स फर्म के सप्लाई शेड्यूल्स और सप्लाई कर्व को दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टेकिंग द प्राइस ऑफ 1 2 3 and 4 5, फर्म ए shows his supply at the given price corresponding this price level 5 10 15 20 and 25, whereas in the same diagrams OX is taking quantity and OY on price. When price high, quantity supplied also high, and when price low, quantity supplied low. In the market supply schedules, we are showing market refer to the supply of all the firms in the market producing supply a particular commodities, or sum total of the firm producing a particular commodity is called industry. Means सभी फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है या इंडस्ट्री कहा जाता है. Thus market supply refer to supply of a industry at a whole
It shows supply response of all the firm producing a particular commodity in the market. This can be shown in schedule and diagram. मतलब बाजार के अंदर काम करने वाली जब सभी फर्में दी हुई भिन्न भिन्न कीमतों पर कितनी वस्तु या स्टॉक का कितना भाग बेचने के लिए तैयार होती हैं तो उसे मार्केट सप्लाई कर्व या मार्केट सप्लाई कहा जाता है। इस मार्केट सप्लाई शेड्यूल्स और मार्केट सप्लाई कर्व के आधार पर दिखाया जा सकता है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल्स आर शोइंग इन दिस when firm A is ready at different price level 5, 10, 15, 20 and 25, a quantity is supplied 10, 20, 30, 40 and 50 at the same price level 5, 10, 15, 20 and 25. Firms is ready to sell 0, 5, 10, 15 and 20. So market supply schedules is the horizontal combinations of firm A and B, means दोनों का जोड़ है 10 plus 0 10, 20 plus 5 25, 30 plus 10 40, 40 plus 15 55 and 50 plus 20 70। नीचे दिए गए डायग्राम में फर्म A का सप्लाई कर्व दिखाया गया है जिसमें 5 पर 10 और इस प्रकार अंत में 25 पर 50 तक की सप्लाई दिखाई गई है। ये एक अपवर्ड स्लोप कर्व है। इन पार्ट बी में फर्म बी का सप्लाई शेड्यूल्स दिखाया गया है और जिसके आधार पर फर्म बी का कर्व है। प्राइस को OYX पर और क्वांटिटी को OXX पर दिखाया गया है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 पर फर्म बी 0 बेचने के लिए तैयार होती है जबकि 25 के ऊपर वो 20 मात्रा दिखाए बेचने के लिए तैयार होती है। इस प्रकार मार्केट ए और बी मार्केट के अंदर ए और बी फर्मों के सप्लाई शेड्यूल्स का जोड़ इंडस्ट्री का या मार्केट का सप्लाई कर्व कहलाएगा। इस प्रकार thus the market supply curve is the horizontal summations of individual supply curve of various firm producing a particular commodity in the market. It means बाजार में 2, 3, 4, 5 या 5 से अधिक 10 कितनी भी फर्में उत्पादन कर रही हों उन सभी के उत्पादन की जोड़ को मार्केट सप्लाई शेड्यूल्स और मार्केट सप्लाई कर्व द्वारा दिखाया जा सकता है क्योंकि ये फर्मों के हॉरिजॉन्टल समेशंस होता है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि मार्केट सप्लाई रेफर टू द सप्लाई ऑफ ऑल फर्म इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग सप्लाई पर्टिकुलर कमोडिटी और सम टोटल of the firm producing say particular commodity is called industry. Thus at market supply refer to the supply of the industry as a whole. It shows supply response of all the firm producing a particular commodity in the market. This can be shown in the second diagram. Okay, last we are discussing another small topics. What is reserve price or the minimum supply price? Reserve price shows that when the price below which seller is not prepared to sell any unit of goods is called reserve price। मतलब एक फर्म वो न्यूनतम कीमत जिससे कम कीमत पर अपनी वस्तु बेचने के लिए तैयार नहीं होती, जैसे मिल्क मिनिमम 60 रुपये, घी 800 रुपये किलो या पेट्रोल 80 रुपये लीटर। मतलब इससे कम कीमत पर वो फर्में अपनी सप्लाई देने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।